Now we will be doing practice of research and development cost. So in this practice question, you will find some cases among which you have to identify which cost is research cost and which one is the development cost, and obviously which should be charged to profit or loss and which should be taken as an expense, as an asset. Okay, तो ये हम इस exercise में देखेंगे, in which we have to distinguish as to which of the following cost would be capitalized. Okay, well, expenditure on research of new improved material costing 10,000. obviously आपने research पे expenditure किया, this is your expense. Okay, capitalize nahi hogi, straightforward profit loss expense debit. Expenditure on applied research amounting 1 million, whatever the amount is, if it is research, it is research. आपकी applied research सीधी सीधी expense में जा रही है, capitalize नहीं हो सकती, asset में नहीं जा सकती. Donation to a research foundation, आपने donation दी है, cost incur हुई है for research foundation, ये भी आपके expense हैं, capitalize नहीं होंगे. Expenses of 200,000 rupees on a project which has the technical feasibility, अब देखिए recognition criteria meet हो रहा है, technical feasibility to be completed. The management intends to complete the project and future economic benefits will be derived. Company has an adequate technical and financial resources to complete the project. Yes, ये आपका कैपिटलाइज होगा, ये डेवलपमेंट फेज पे एक्सपेंडिचर इनकर होते हुए नजर आ रहे हैं. Then expenditure on a project amounting to rupees 500,000. Later on, it was discovered that this project is not technically possible to continue. अब अगेन हमने कहा था वो 6 क्राइटेरिया मीट होने चाहिए, उनमें से एक भी अगर मीट नहीं होगा, दैट वुड बी एक्सपेंस्ड आउट स्ट्रेट फॉरवर्डली, प्रॉफिट लॉस में चला जाए. एंड फिर एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोटोटाइप, आप प्रोटोटाइप पे जो भी कॉस्ट इनकर करेंगे, दैट वुड बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपका डेवलपमेंट कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा. तो ये आप देख लीजिए डी एंड एफ, ये आपके जो हैं डेवलपमेंट कॉस्ट है विच इज टू बी कैपिटलाइज्ड एज योर intangible asset and would be appearing in your balance sheet. Okay, well, तो जो important point यहाँ पर हमने डिस्कस किया और लर्न किया वो ये है कि रिसर्च फेज पर जो भी कॉस्ट इनकर होगी, स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस में चार्ज हो जाएगी. और डेवलपमेंट फेज पर अगर क्राइटेरिया मीट होता है तो those costs will be capitalized. If we are unable to meet the criteria, then that cost will also be straightforwardly taken to profit loss as an expense. Very important to remember. Thank you.